శ్రీవారి కళ్యాణ ఉత్సవం. శ్రీవారి కళ్యాణోత్సవం గృహస్థులందరూ సంకల్పం చెప్పుకోవాలండి. ముందుగా నేను చెప్పిన విధంగా తిరిగి చెప్పవాలను. మమ అన్నప్పుడు మీ యొక్క గోత్రం, మీ పేరు, మీ భార్య పేరు, పిల్లల పేర్లు, కుటుంబ సభ్యుల పేరు సహ కుటుంబంగా చెప్పుకోవాలి. రెండు చేతులు జోడిస్తూ స్వామివారి పాదాలను శరణ కోరుతూ నేను చెప్పిన విధంగా తిరిగి చెప్పాలి. శ్రీ గురుభ్యో నమః. శ్రియః కాంతాయ కళ్యాణ నిదయే నిదయేర్దినం శ్రీ వెంకట నివాసాయ శ్రీనివాసాయ తే నమః. శ్రౌత స్మార్త ఆదికం కర్మ నిఖిలం ఏన సూత్రితం తస్మై సమస్త
वेदार्थ विदे विकनसे नमः श्रुति स्मृति नदी पूर्णम शास्त्रकल्लोल शंकुलम विष्णुभक्ति युदकं शुद्धम वंदे श्री विकनोर्नवम शुक्लां भरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोप शांतये श्री गोविंद 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 अद्य श्री महाविष्णोः आज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीयपरार्धे श्री श्वेतवराहकल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे कलियुगे प्रथमपादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे शकाब्दे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे श्री आदिवराह क्षेत्रे वेंकटाचले श्रीनिवासस्वामिनः दिव्यसन्निधौ कल्याणमण्डपे अस्मिन् वर्तमानेन व्यावहारिक चान्द्रमानेन प्रभवादि षष्ठी संवत्सराणां मध्ये शुभनक्षत्र शुभयोग शुभकरण एवं गुण विशेषण विशिष्टायाम् अस्यां शुभतिथौ श्री श्रीनिवासस्वामिनः प्रीत्यर्थं मम గోత్రోద్భవస్య ఇప్పుడు మీ యొక్క గోత్రం చెప్పుకోవాలి. నామధేయస్య ఇప్పుడు మీ యొక్క పేరు చెప్పుకోవాలి. ధర్మపత్ని సమేతస్య ఇప్పుడు మీ యొక్క భార్య పేరు చెప్పుకోవాలి. సపుత్రకస్య ఇప్పుడు మీ యొక్క పిల్లల పేరు చెప్పుకోవాలి. సహ కుటుంబస్య ఇప్పుడు మీ యొక్క కుటుంబ సభ్యుల పేరు చెప్పుకోవాలి. మీ యొక్క కోరికలను ప్రార్థనలు మనసులో స్వామివారికి విన్నవించవలసినది. చెప్పండి. సహ కుటుంబానాం క్షేమ స్థైర్య ధైర్య వీర్య విజయ అభయ ఆయు ఆరోగ్య ఐశ్వర్యాణం అభివృద్ధ్యర్థం ఇష్టకామ్యార్థ సిద్ధ్యర్థం ధర్మార్థ కామ్యమోక్ష చతుర్విధ ఫల పురుషార్థ सिद्ध्यर्थम सत्संतान सौभाग्य सिद्ध्यर्थम राजद्वारे सर्वकार्य आनुकूल्य सिद्ध्यर्थम श्री श्रीनिवासस्वामिनः करुणा कटाक्ष वीक्षण परिपूर्ण अनुग्रह सिद्ध्यर्थम लोकक्षेमार्थम श्री भूमि नीला समेतस्य श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिक कल्याणोत्सवं श्री वैकानस दिव्य आगमोक्त प्रकारेण अहम आचार्य मुखेन कारयिष्ये सर्वं श्री श्रीनिवासार्पितमस्तु. ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవిందా கோவிந்தா கோவிந்தா என்று அந்த திருமலை அப்பனை செவித்துக்கொண்டு இன்றைய கல்யாண உற்சவத்திலே சங்கல்ப மந்திரங்களை தொடர்ந்து இப்பொழுது நாம் சேவிக்க இருப்பது
விஸ்வக்சேன் ஆராதனை சுத்தி புண்ணியவாஜனம். திருக்கல்யாண மகோத்சவத்தின் நேரடி ஒளிபரப்பின் வர்ணனையாளர் திருமதி ஏ அருணா. இதோ பகவானே வேங்கடவனே கோவிந்தா, பாதாதி கேசமாக உன்னை செவிக்கிறோம். அகிலாண்ட கோட்டி பிரம்மாண்ட நாயகா, எங்களை எல்லாம் ரக்ஷி என்று அந்த எம்பெருமானை செவித்து கொண்டு தாயார்களையும் செவிக்கலாம். பெருமாள், அந்த பெருமாளுடைய அருளை பெறவும், பெருமாளோடு நம்மை தொடர்பு படுத்தி கொண்டு நாம் பெறவும் அவனை அன்றாடம் சேவிக்கிறோம். அவரவர் விருப்பத்திற்கு ஏற்ப பகவானோடு நாம் பேசும் பொழுது நல்ல வார்த்தைகளை உச்சரிக்க வேண்டும் அல்லவா? அதைத்தான் சந்தஸ் என்னும் அடிப்படையில் மந்திரம், ஸ்லோகம், ஸ்தோத்திரம் என்று கூறுகிறோம். விஷ்ணு சகஸ்ரநாமம், காயத்ரி மந்திரமும் சொல்லுகிறோம். பகவத்கீதை ஸ்லோகம் ஆன இந்த இத்தனை மாற்றி மாற்றி கூறுகிறோம். இதோ விஸ்வக்சேன் ஆராதனை சுத்தி புண்ணிய வாசனத்துடன் திருக்கல்யாண மகோத்சவம் ஆரம்பமாகிறது. திருவேங்கடவனே கோவிந்தா, சப்தகிரி வாசனே கோவிந்தா கோவிந்தா என்று அந்த எம்பெருமானை செவித்து கொண்டு சேனா முதலி எனப்படும் விஸ்வக்சேனருக்கு ஆராதனையை ஆரம்பிக்க உள்ளார் அர்ச்சக சுவாமி. சேவிக்கலாம். சித்திரை மாதம் 24வது நாள் செவ்வாய்க்கிழமை சதுர்தசி அமாவாசையுடன் கூடிய இந்த நன்னாளிலே அஸ்வினி நட்சத்திரம் மற்றும் விசேஷமான இந்த செவ்வாய்க்கிழமை நன்னாளிலே பகவானுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்தை நேரடி ஒளிபரப்பில் செவித்து கொண்டிருக்கிறோம். பகவான் விஷ்ணுவின் 1000 பெயர்கள் கொண்ட விஷ்ணு சஹஸ்ரநாம ஸ்தோத்திரம் ஒரு உதாரணம். நிருமகுணசிந்துரநித்யலக்ஷ்மே சமேதோ நிகலநிகமவேத்யோனிஸ்துலோ வெங்கடேஷः நிஜச்சரணசமர்த்யாசக்தபக்தோ கரக்ஷே நிவசதோர்தயே மே ஸ்வாங்கிரபக்தின் விதன்வன் சுக்லாம்பரதரம் விட்டம் ததவர்ணம் ததர்புஜம் பிரசன்னவதனம் தியாஜேத் சர்வவிக்னோபசாந்தஜேத் ததேவ லக்னம் சுதனம் ததேவ தாராபலம் சந்திரபலம் ததேவ வித்யாபலம் தெய்வபலம் ததேவ லக்ஷ்மீ பதே தேங்கிருகம் ஸ்மராமி யத்ர யோகேஸ்வர கிருஷ்ணோ யத்ர பார்தோ துனர்தரः தத்ர ஸ்ரீ விஜயோர்போதி த்ருவாணி திருமதின் மம ஸ்மிருதே சகல கல்யாண பாதனம் யத்ர ஜாயதே புருஷஸ்தமஜன் நித்யம் பிரஜாம சரணம் ஹரிம் லாபஸ்தேஷாம் ஜிகஸ்தேஷாம் குதஸ்தேஷாம் பராபவः ஏஷாம் இந்தே விரதஸ்யாமோ விரதகஸ்தோ ஜனார்தனः ஆபதாம்போஹர்த்தாரம் தாதாரம் சர்வசம்பதாம் லோகாபிராமம் ஸ்ரீராமம் பூஜோ பூஜோ நமாம்யஹம் பிராணாநாஜம் யா ஓம் பூஹ். अद्यमया पूर्वोक्त एवं गुणविजयजनमिट्टा जामस्यां सुपतितो स्कदेवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीमदकलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्य श्रीभूमिनीलासमेत श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकन्मार्गं शुद्धिपुण्यावादनं करिष्ये आदौ निर्विघ्नेन प्रथमावाप्त्यर्थं विश्वक्षेणाराधनं करिष्ये तथा कलशाराधनं करिष्ये दारादसप्तसुतमानतेषु सरत्सरत्सु परिपूरितेषु अवामिगण्डं प्रथमादिकृष्ये वृणोमि दत्ताकं सुचरकं सुधर्म इदमापच्यमा जपदमाज्ञान्ता जान्ततमाचवाचपदमाः पूता पूततमा पुण्या पुण्यतमा मेद्या मेद्यतमा अमृतां प्रतरसाः पूता ब्रह्म पवित्रेण पूता सूर्यस्य रश्मिः एतेषु तं वरुणये सहस्रं जग्निजाः पाशा विददाः पुरुत्राः तेभ्यो न इन्द्रस्य विदोद विष्णुर् विश्वे देवा मुञ्चन्तु मृतस्वस्य ओं भो वरुणमावाहयामि प्रचेतसमावाहयामि रक्ताम्बरमावाहयामि जातस्पतिमावाहयामि वरुणाय नमः इदमासन वरुणाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि वरुणाय नमः पुण्यपुष्पैः पूजयामि वरुणाय नमः गुरोपहार निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि वरुणाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि सुप्रीत सुप्रसन्नो वरदो भवतु कोमाग्नेजोजस्मात्मजामहे त्वा विश्वे जदात्मन्मयितो निशम्भो वैराजन्ते सुखदनिदत्तां प्रैषामदेशो बुधानामनातिः यामे सस्तान्दनिदान् ददातु ओं भूस्वक्षेणमावाहयामि शान्तमावाहयामि हरमावाहयामि अमितमावाहयामि नित्यानपायनमावाहयामि तद्दक्षिणे सूत्रपदेमावाहयामि वामे जयामावाहयामि विश्वक्षेणाय नमः इदमासन विश्वक्षेणाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि विश्वक्षेणाय नमः पुण्यपुष्पैः पूजयामि विश्वक्षेणाय नमः शान्ताय नमः हराय नमः अमिताय नमः
विश्वक्षेणाय नमः गुलोभार निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि विश्वक्षेणाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि सुप्रीतः सुप्रसन्नो वरादो भवतु भविद्वृणज्ञः सुपुण्याहं करोमि कुरुष्मा स्वस्य प्रोक्षितमस्तु अस्तु प्रजापति प्रयतां प्रजापतिः श्याम्यन्तघोराणि श्याम्यन्तपापानि श्याम्यन्तमायितयः शुभानि वर्धन्तां वर्धतां शुभानि श्याम्यन्तघोराणि श्याम्यन्तपापानि श्याम्यन्तमायितयः शुभानि वर्धन्तां वर्धतां शुभानि श्याम्यन्तघोराणि श्याम्यन्तपापानि श्याम्यन्तमायितयः शुभानि वर्धन्तां वर्धतां शुभानि वं मतो देवावन्तु नो यदा विट्टर्विचक्रमे पृथिव्याः सप्तधामभिः इदं विट्टर्विचक्रमे त्रेधानतदेवतं समूढमस्य भागुंसुरे त्रीणि पदावचक्रमे विट्टर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् कृष्णो कर्माणि पुष्कतयदो व्रतानि पुष्पसे इन्द्रत्वजुद्धस्य तद्विष्णोः परमं पदकं तदा पश्यन्ति शौर्यः दिवे वचक्षुराददं तद्विप्रासो विपण्यवो जाग्रुमागुं सस्कमिन्दते विष्णोर्यत्परमं पदं भद्रं कर्णे विष्णुयामदेवाः भद्रं पश्ये माक्षभिर्यजत्राः स्त्रीरङ्गैः सुष्ठुभागं सस्तनोभिर्विषेम देवतं यदायुः शतमिन्न शरदान्ते देवायत्राणश्चक्राचरसन्तनूनः पुत्रासो यत्र पितरोपवन्ति मानो मध्यानि ऋषदायद्गन्तोः आदितिर्जौरतिरन्तरिक्षं अतिथिर्मातास्य पिता च पुत्रः विश्वे देवादितिः पञ्चजना अतिथिर्जातमतिथिर्जनित्वं यत्पुण्यन्नक्षत्रं तद्वत्कुर्वेदोपव्यशं यदा वै सूर्योदयति अथ नक्षत्रन्येति यावत् तत्र सौर्यो गच्छेत् यत्र जगन्यं पश्येत् तावत् कुर्वेदिकार्ये स्यात् पुण्याः एव कुरुते प्राणानायम्यास्यां स्मृतितो श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवागोत्सकन्माङ्गं सत्यमुज्जावाचं सत्यं प्रवन्तो क्रमणे त्वत्ते वृद्धिं प्रवन्तो कर्मरज्यतां वृद्धिः समृद्धिः पुण्याहं समृद्धिः आभोजट्ठामजोपवस्थानवोर्जेतदादन महेरणाजचक्षुषे योगत्वतमोरधस्तस्य पादयते अनः उषधेरव मातरः तस्मा अरङ्गमामवो यत्सक्तजाय जन्मद आपो जनयदा जनः दिविश्रेष्वान्तरिक्षे तस्मात् पृथिव्याः सम्भव ब्रह्मवच्चसमसि ब्रह्मवच्चसायत्वा पवमानस्वर्जनः पवित्रेण विचर्षणिः यः कोदासु पुनातुमा पुनन्तुमा देवजनाः पुनन्तु मनवोदय पुनन्त विश्व आयुवः जातवेदः पवित्रवद पवित्रेण पुनाहि मां शुक्रेण देवदेज्यद अग्ने कृत्वा कृतोकुम्रणो यत्ते पवित्रमुच्चषि अग्ने विततमन्तराः ब्रह्मदेन पुनेमहे उपाभ्यान् देवसविदः वैश्वदेवे पुनते देव्यागाद यस्ते भव्येस्तनवो वेदवृट्टाः तजामदन्तस्य तमाद्येषु वजग्गुस्यामुपदजौर्गीणां वैश्वानरो रश्मिर्मा पुनादो वादप्राणेने श्रोमयोभूः द्यावा पृथिवे पयसापयोभिः तथावरे यज्ञे मा पुनेतां पुरद्भिस्सवितस्त्रुभिः परिशिष्टैर्देवमन्मभिः अग्ने दक्षैः पुनाहिमां येन देवा पुनदा येनापो दिव्यङ्कसः तेन दिव्येन ब्रह्मणा इदं ब्रह्म पुनेमहे वावमानीर्यो अद्येति ऋषभिः संवृतकं रसं तस्मै सरस्वते गृहे क्षैरकं सर्पिर्मदोदकं पावमाने स्वस्तयनेः सुतगायुकृतश्च्युतः ऋषभिः संवृतोर्जः ब्राह्मणेषु मृतकं हितं येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन दहत्रधारेण पावमान्यः पुनन्तु मा प्राजापत्यं पवित्रः सतोऽद्यामकं जरण्मयो तेन ब्रह्मविदो वयं पोदं ब्रह्म पुनेमहे इन्द्रस्वनेते सहमा पुनातो सोमस्वस्या वरुणः समेत्य यमो राजा प्रपिनापि पुनातु मां जातवेदा मूर्जयन्त्या पुनातु तत्संयोरावृणेमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवे स्वस्तिरस्तुनः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः पूर्ध्वन्ति गातुपेषुजं सन्नो अस्तु द्विपदे षञ्चतुष्पदे ॐ शान्तिः 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 प्राच्यान् दिशु देवार्त्वजो मार्जयन्तान् दक्षिणाजान् दिशु मासाः पितरो मार्जयन्ताम् उदेज्यान् दिशु गृहात् पशवो मार्जयन्ताम् उदेज्यान् दिश्यापवोषधयो वनस्पतयो मार्जयन्ताम् ऊर्ध्वाजान् दिशु यज्ञः संवत्सरो यज्ञपतिर्मार्जयन्ताम् अदोदरादरैर्नागेभ्यो मार्जयन्ताम् वास्तोत्पदे प्रतिजानि हस्मान् स्मा वेशोहणमेवोपमानः एते न्यूनं प्रजदन्नो चतुस्मा
सन्नयेत्वपदे चतुष्पदे मयि महाभास्तोष्पदे विश्वारूपाण्या विशन् सकासुसे भजेति नः आपोजिष्ठामजोपस्थानवोर्जेतदातन महेरनाजक्तुषे जोपत्वदमोरदस्तस्य वाचकते अनः उषधेरव मातरः तस्मा अरङ्गमामवोजस्यक्षजाय जन्वदा आपो जनयदाचनः वरुणाय नमः विश्वक्षेणाय नमः पुनर्पाद्यर्जातुं सर्पयामि वरुणाय नमः विश्वक्षेणाय नमः यदा सुखमदास्थानं प्रतिष्ठा भजामि क्षोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च ஓம் நமோ வெங்கடேசாய. கோவிந்தா கோவிந்தா. திருமலை அப்பனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே நாம் இப்பொழுது சேவித்துக் கொண்டிருப்பது விஸ்வக்சேன ஆராதனை சுத்தி புண்ணியவாஜனத்தை தொடர்ந்து அங்குரார்ப்பண கைங்கரியம். பகவான் விஷ்ணுவின் 1000 நாமங்களை கொண்ட விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமமானது ஸ்தோத்திரம் ஒரு உதாரணம். தினந்தோறும் வாழ்க்கையில் நாம் ஒருவரிடம் காரியத்தினை சாதித்து கொள்ள அவரை புகழ்கிறோம், பாராட்டுகிறோம். பலனை எதிர்பார்த்தும் எதிர்பார்க்காமலும் அவரவரின் விருப்பப்படி பகவானை மக்கள் ஸ்தோத்திரம் செய்கிறார்கள். மந்திரம் மன்னாத்ராயத்தே மந்திரம் என்பார்கள். மனதால் தன்னை ஜெபிப்பவனை காப்பாற்றுவது மந்திரமாகும். அப்படி ஒரு சிறந்த உதாரணத்திற்கு காயத்ரி மந்திரத்தை சொல்லலாம். அதேபோல் பகவானை நாம் சேவிக்கும் பொழுது ஆத்மார்த்தமாக அவனுக்கு செய்ய வேண்டிய கைங்கரியங்களை செய்து பலனை எதிர்பார்க்காமல் அந்த சேவைகளை செய்தால் பகவான் நிச்சயம் நமக்கு அருளி செய்வான். ஸ்ரீகிருஷ்ணர் கூறியது போல் உன்னுடைய சேவைகளை கைங்கரியங்களை நீ செய், அதனுடைய பலனை எதிர்பார்க்காதே என்று. அப்படித்தான் நாம் கைங்கரியங்களை பகவானுக்கு செய்ய வேண்டும். இதோ திருமுலை சாற்றுதல் கைங்கரியத்திலே நவதானியங்களை மண் பாலிகைகளிலே சேர்த்து திருத்துழாய் அக்ஷதை போன்றவைகளால் ஆராதனை செய்கிறார்கள். அந்த தேவர்களை எல்லாம் அழைக்கிறார்கள். அப்படி அந்த நவதானியங்கள் எப்படி நீரை வைத்தால் வளருமோ அதுபோல திருமண வாழ்க்கையும் நன்றாக இருக்கும் என்று ஒரு நம்பிக்கை. வெங்கடவன் எடுத்த அவதாரங்களிலே கிருஷ்ணாவதாரம் மிகவும் சிறப்பு வாய்ந்தது. அதிலே ருக்மிணி பிராட்டி எவ்வாறு மனம் புரிந்தாள் என்று பார்த்தால், காலயவனின் சம்ஹாரம் செய்த பிறகு ஸ்ரீகிருஷ்ணன் முசுகுந்தனுக்கு திவ்ய தரிசனம் தந்தாராம். பகவான் கொடுத்த வரங்களை கேட்டு குகையிலிருந்து வெளிவந்தான் முசுகுந்தன். இஷ்வாக்கு வம்சத்தை சேர்ந்தவன் கந்த மாதவ மலைக்கு சென்று அங்கே கடும் தவம் செய்யலானான். ஸ்ரீஹரிக்கு அந்த கடும் தவத்தை அர்ப்பணம் செய்தான். அங்குள்ள அனைத்து சம்பத்துக்களையும் மாட்டு வண்டியில் ஏற்றி துவாரகைக்கு அனுப்பும் பொழுது எதிரே ஜராசந்தன் வந்தானாம். ஆனால் அந்த பலராமகிருஷ்ணர்கள் அவனுடன் அப்பொழுது சண்டையிடவில்லை. கிருஷ்ணர் பயந்தது போல் ஓடி சென்று விட்டார்கள். அதை பார்த்து ஜராசந்தன் உள்ளே சிரித்து கொண்டானாம். பிரவர்ஷம் என்ற மலை மீது ஏறினார்கள் பலராமகிருஷ்ணர்கள். அந்த மலை மீது எப்பொழுதும் தேவேந்திரன் மழை பொழிவித்து கொண்டே இருப்பான். எவ்வளவு தேடியும் பலராமகிருஷ்ணர்கள் ஜராசந்தன் கண்களுக்கு தென்படவில்லை. இதோ ரக்ஷா பூஜை ஆரம்பமாகிறது. श्रीवादस्वामिनः वैवागोत्सकर्माङ्गं सज्जोऽङ्ग्रक्षाबन्धरभोजाञ्च करिष्ये सुजोव्यायति प्रोक्ष ओं सुजेव्यामृतस्तुतीनागं सुचगं जनाम्यध्वरगं सुदिभ्यः कृतेन दत्यमृतजाप आजं सुजन्मानस्तुतयः पावकाः ओं भो शेषमावाहयामि नागराजमावाहयामि सहस्तिरुषमावाहयामि अनन्तमावाहयामि शेषाय नमः इदमासनं शेषाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि शेषाय नमः पुण्यपुष्पैः पूजयामि शेषाय नमः गुलोपहार निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि शेषाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि सुप्रीतः सुप्रसन्नो वरदो भवतु। ओं स्वस्ति नो मिमीतामश्विना भगः स्वस्ति देव्यतिर्वणः स्वस्ति पोषासुरो ददातु न स्वस्ति ध्यावा
पृथिवी सुचेतुना स्वस्तये वायुरुपब्रमावहै सोमं स्वस्ति भुवनस्सजस्पतिः बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्तये स्वस्तय आदित्यासो भवन्तुनः विश्वे देवानो अद्या स्वस्तये वैश्वानरो वसुरग्निः स्वस्तये देवावद्ब्रुवस्वस्तये स्वस्ति नो रुद्रपार्धं मदः स्वस्ति मित्रावरुणा स्वस्ति भद्रैरेवते स्वस्ति न इन्द्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नो अदते कृते स्वस्ति पन्तामनुचरेम सूर्याचन्द्रमसामिव पुनर्ददाज्ञादासन्दमेमहे स्वस्तैनन्त्राक्षमनिट्टने महर्बोधं वायसन् देवतानां ध्रुवन्ते राजा वरुणो ध्रुवन् देव बृहस्पतिः ध्रुवन्त इन्द्रश्चाग्निश्च राष्ट्रं धारयतान् ध्रुवं शुभगुं शुभम्. ஏடுகொண்டலவாடா வெங்கடரமணா கோவிந்தா கோவிந்தா. திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே நாம் இப்பொழுது சேவிக்க இருப்பது அடுத்ததாக ரக்ஷா பூஜையை தொடர்ந்து ரக்ஷா பந்தன கைங்கரியம். பகவானை ஆழ்வார்கள் பதின்மர்களிலே பிரசித்தவர் கலியன் என்கின்ற சொல்லப்படும் திருமங்கை ஆழ்வார். ஆசு கவி, மதுர கவி, விஸ்தார கவி, சித்திரக்கவி என்று 4 விதமான கவிகளை இயற்றியதால் 4 கூவி பெருமான் என்ற மற்றொரு பெயரும் உண்டு இவருக்கு உண்டு. 4000 திவ்ய பிரபந்தங்களிலே இவர் அருளி செய்தவை 6 பிரபந்தங்கள். அதிலே கடைசியாக கொள்ளப்பட்டது திருநெருந்தாண்டகம் என்று. அதிலே ஒரு பாசுரம் ஆழ்வார் தாம் கண்ட ஸ்ரீராமபிரானை அந்த பாசுரத்திலே அமைத்து அனுபவிக்கிறார். இதோ வேங்கடவனாகிய அந்த பகவானுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை செய்ய உள்ளார் அர்ச்சக சுவாமி. இதிலே அந்த நெடுந்தாண்டகத்திலே ராமபிரானை பற்றி ஒரு பாசுரத்தை சற்று பார்க்கலாம். இந்த பிரபந்தத்திலே முதல் 10 பாசுரங்களை ஆழ்வார்கள் தரமான தன்மையிலும் மேல் பாசுரங்கள் ஒரு தாய் பேசும் பாசுரங்களாகவும் அதற்கு மேல் 10 பாசுரங்கள் தலைமகளான தன்மையிலும் பாடப்படுவதாக அமைந்திருக்கிறது. அவ்வாறு தலைமகளான தன்மையில் ஆழ்வார் தன்னை ஜனகராஜன் மகள் ஜானகியாகவும் சக்கரவர்த்தி திருமகனான திரு ராமபிரான் பாட்டுடை தலைவனாகவும் உருவப்படுத்தி தலைமகளை காணும் நிலையில் பாசுரம் அமைத்திருக்கிறார் ஆழ்வார். மை வண்ணன் அருங்குஞ்சி குழல் பின் தாழ மகரம் சேர் குழையிரு பாடிலங்கி ஆட எய்வண்ண வெண்சிலையே துணையாய் இங்கே இருவராய் வந்தார் என் முன்னே நின்றார் கைவண்ணம் தாமரை வாய் கமலம் போலும் கணினையும் அரவிந்தமடியும் அக்தே அவ்வண்ணத்தவர் நிலைமை கண்டும் தோழி அவரை நம் தேவர் என்றிஞ்சினாமோ என்று நறுமணம் கமழும் குழல் காற்றை தலையின் பின்புறம் அலை போல கருத்து காணப்படுகிறது. காதிலே மகர கொண்டலங்கள் அசைந்து ஆடுகிறது. எதிரிகளை அழிப்பதற்கென்றே துணையாக கொண்ட வில்லை கையில் ஏந்தி நிற்கும் நிலை. அவர் தன் தம்பி லக்ஷ்மணனுடன் இருவராய் வந்து தலைமகளுக்கு காட்சியளித்தார் ஸ்ரீராமபிரான். இத்துடன் மனம் நிறைவு பெறாத ஆழ்வார் ஸ்ரீராமபிரானுடைய ஒவ்வொரு அவயத்தையும் தனித்தனியாக எடுத்து கை, வாய், கண்கள் ஒவ்வொன்றும் மலர்ந்த தாமரை இதழ்களை ஒத்திருப்பதாக மேலும் விவரித்துள்ளார். இது போன்ற பல அங்க லட்சணங்களை பரிபூர்ண லட்சணங்களை கொண்ட ஸ்ரீராமபிரான் தலைமகளுக்கு தன்னை காட்டி கொடுக்க அவரை பரபிரம்மமாக்கிக் கொண்டு அதனால் தனக்கு ஏற்பட்ட பயத்தை தெரிவிக்கிறார் என்ற அந்த பாசுரத்தின் பொருள் தெரிவிக்கிறது. அப்படி அங்கே ராமாவதாரம் எடுத்தவன் இங்கே திருமலை அப்பனாக நாம் சேவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். அவனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே இதோ தாயார் ஸ்ரீதேவி பிராட்டிக்கு ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை முடித்தார். லக்ஷ்மி ரமண கோவிந்தா கோவிந்தா. அடுத்து பூமி பிராட்டிக்கும் ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை செய்து கொண்டிருக்கிறார் அந்த அர்ச்சக சுவாமி. மத்சித்தா மத்கத பிராமணா போதயந்தே பரஸ்பரம் கதயம் தஸ்யமாம் நித்தியம் துஷ்யஞ்சி ரமஸ்ரிதா. இது கீதா ஸ்லோகம் என்பது. தன்னுடைய நாயகி தன்னுடைய நாயகனை பற்றி நினைப்பிலே சில பாசுரங்களை எடுத்து காட்டுகிறார். அதாவது அப்படி பாசமாய் பிரீத்தியாய் இருப்பவள் தான் அந்த பெண்ணான காதலி.
அந்த பகவானை சேவித்துக்கொண்டு எப்பொழுதும் தன்னை அர்ப்பணிக்கவே காத்து கொண்டிருப்பாள் இந்த பிராட்டியானவள். இதோ பூமி பிராட்டி திருக்கரத்திலே அர்ச்சக சுவாமி அந்த ரக்ஷையை அணிவித்தார். அதைத் தொடர்ந்து திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே எம்பெருமான் அகிலாண்ட கோட்டி பிரம்மாண்ட நாயகன் வேங்கடவனுடைய சன்னிதானத்திலே நடைபெற்று கொண்டிருக்கும் இந்த திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே அர்ச்சக சுவாமி கூட தன்னுடைய கரத்திலே ஆத்ம ரக்ஷைக்கான அந்த கயிற்றினை அணிந்து கொண்டு மேலும் கைங்கரியங்களை செய்ய உள்ளார். பகவானே, வேங்கடவனே, சப்தகிரி வாசனே, கருடா ரூடனே, கோவிந்தா கோவிந்தா என்று நாம் அந்த பகவானையும் நாச்சிமார்களையும் சேவித்து கொண்டு அடுத்ததாக அக்னி ஆவாகனம் செய்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. சேவிக்கலாம் அக்னி பகவானை. திருவேங்கடவனே, சப்தகிரி வாசனே, கருடாரூடனே, கோவிந்தா கோவிந்தா. அக்னி ஆவாகனம் செய்து ஹோமத்தை வளர்க்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. ஆகாரகர்ம கரிஷ்யே ஏதோன்மித்ரிக்னாலயம் ப்ரோக்ஷ்ய ஏதோன்மிந்திரம் ஸ்தவாம் சுத்தம் சுத்தேன சாம்னா சுத்தைருத்தைர்வா விருத்வாம்சம் சுத்த ஆசைர்வா மமக்தோ இந்திரசுத்தான ஆக சுத்த சுத்தாபிரோதமிஹி மயி தேவான் திரவணமாயி சந்தாம் மய்யாசுரஸ்து மயி தேவஹூதிஹி दैव्याहोता रावणत पूर्वेरिट्टास्याम तनुवासुमेराः उद्धन्यमानमस्यामेद्यपात्मानं यजमानस्य हन्तु शिवानः सन्तु पृथिवी तन्नो शाता पृथिवी दोकशाता पूतक्षतनेन सौम्याकृणद्भगं रसना होतभिकं तद् तत्सवितुर्वरेण्यं वर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्तण्डिले भूमिमावाहयामि रेखाजा स्कन्दमावाहयामि रेखा गायत्र्याः प्रोक्ष्य तत्सवितुर्वरेण्यं वर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् जातवेदो अग्निं गृहीत्वा जातवेदो भुवनस्य रेदो हृदिञ्चदपदग्नैश्वरे अग्निमस्वस्तादहव्यगुं समीगर्भाजनयन्योमयो भूः वृतप्रदेको वृतयो निरग्ने वृतसमिज्यो कृतमस्यान्नं वृतपृषस्वा सरितो ब्रह्मन् कृतं ब्रह्मन् सरिजा यक्षदेवान् आजुर्दाग्ने विशोचशानो कृतप्रदेको कृतयो निरेति तत्सवितुर्वरेण्यं वर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् अतितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसवितप्रसुव ओं ब्रह्मजज्ञानं प्रथमं पुरस्तात् विषेमतस्सुरजो वेनावह स बुद्धिया पुमास्तविट्टा सतत्सजो नमतत्सवः ओं वो ब्रह्माणमावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि हिरण्यगर्भमावाहयामि पितामहमावाहयामि ब्रह्मणे नमः इदमासन सोमो देनकं सोमर्वन्तमाचकं सोमो वीरङ्कर्मण्यं ददातु साधन्यविदत्तकं समेजं पितुश्रवणं यो ददातु तस्मै ओं वो सोममावाहयामि यज्ञाङ्गमावाहयामि इन्दुमावाहयामि चन्द्रमावाहयामि सोमाय नमः इदमासन ब्रह्मसोमाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि ब्रह्मसोमाय नमः पुण्यपुष्पैः पूजयामि ब्रह्मसोमाय नमः गुलोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि ब्रह्मसोमाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि सोम प्रोक्षिष्यामि प्रोक्ष यज्ञं देवताव्रतगित्वन्नागच्छपट्टेजमानोऽस्तु सप्त ऋषीणागं सुकृतां यत्र लोक तत्रैमग्नं यजमानं च देहि ओं प्रोक्ष सोम प्रोक्षिष्यामि प्रोक्ष यज्ञं देवताव्रतगित्वन्नागच्छपट्टेजमानोऽस्तु सप्त ऋषीणागं सुकृतां यत्र लोक तत्रैमग्नं यजमानं च देहि पात्रादादावमादाय पवित्रेस्तो वैष्णव्येस्तो यज्ञजेस्तो वाजपूतेस्तो विष्णो मनसाभूतेस्तो यज्ञस्य भावनेस्तः दिवेत्वा अन्तरिक्षायत्वा पृथिव्यैत्वा पोषायत्वा स्वाहा देवेभ्यः आदित्यव्यञ्जनमसि पश्चिमतो विष्णोस्तोपोऽसि दक्षिणतो विष्णोस्तोपोऽसि उत्तरतो विष्णोस्तोपोऽसि प्राच्यां विष्णोस्तोपोऽसि श्रुतासि घृतासि ध्रुवासि दारुणासि विष्णुमावाहयामि महाविष्णुमावाहयामि श्रुता विष्णुमावाहयामि व्यापिनारायणमावाहयामि ब्रह्मं प्रणेष्यामि यजमानवाचं गच्छ सोम प्रणेष्यामि यजमानवाचं गच्छ प्रणयज्ञं देवताव्रतगित्वन्नागच्छपट्टेजमानोऽस्तु सप्तऋषीणागं सुकृतां यत्र लोक तत्रैमग्नं यजमानं च देहि ओं प्रोक्ष पात्रादादावमादाय प्रोद्देस्तो वैष्णव्येस्तो यज्ञयेस्तो वाजपूतेस्तो विष्णोमनसाभूतेस्तो यज्ञस्य भावनेस्तः
कोवो जनत्को सवो जनत्को सब्जिषन्तान् विषः पात्राणि देव यज्ञायै सब्जिषन्तान् विषः पात्राणि देव यज्ञायै दक्षिणपनदौ ब्राह्मणेन तीर्थेन प्रजापतिमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निशोममावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि ब्रह्माण्डमावाहयामि वशूनावाहयामि मृजानावाहयामि रुद्रानावाहयामि अपोपस्पृश्य श्रीविष्णुमावाहयामि बृहस्पतिमावाहयामि मित्रमावाहयामि वरुणमावाहयामि आदित्यानावाहयामि अश्विनमावाहयामि भूषणमावाहयामि कक्षमावाहयामि कक्षदेवतसोमावाहयामि औपासनज्ञमावाहयामि यज्ञविश्वान् देवानावाहयामि सर्वदेवानावाहयामि आद्यभागे प्रजापतिष्ठनिर्वपामि इन्द्राजिष्ठनिर्वपामि अग्नेजिष्ठनिर्वपामि सोमाजिष्ठनिर्वपामि अग्नेजिष्ठनिर्वपामि सोमाजिष्ठनिर्वपामि अग्निसोमाभ्याकुष्ठनिर्वपामि प्रजापतिजिष्ठनिर्वपामि ब्रह्मणेजिष्ठनिर्वपामि वसुभ्योजिष्ठनिर्वपामि मरुभ्योजिष्ठनिर्वपामि रुद्रेभ्योजिष्ठनिर्वपामि अपोपस्पृश्य श्रीविष्णुवेजिष्ठनिर्वपामि बृहस्पतिजिष्ठनिर्वपामि मित्राजिष्ठनिर्वपामि वरुणाजिष्ठनिर्वपामि आदित्याभ्योजिष्ठनिर्वपामि अष्टभ्याकुष्ठनिर्वपामि पूष्णेजिष्ठनिर्वपामि कक्षाजिष्ठनिर्वपामि कक्षदेवतसोमाजिष्ठनिर्वपामि औपासनज्ञाजिष्ठनिर्वपामि यज्ञविश्वेभ्यो देवेभ्योजिष्ठनिर्वपामि सर्वदेवेभ्योजिष्ठनिर्वपामि आद्यन्तु प्रतिष्ठजामि चरन्तु प्रतिष्ठजामि अग्ने ज्योतिरसि समितिः स्वाहा अमृतुणमसि अन्तरितकं रक्ष अन्तरिताराधयः प्रतिष्ठकं रक्ष प्रतिष्ठाराधयः चक्पतिस्वापणात् त्वच्चित्रेण पवित्रेण वस सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा वाक्पतिस्वापणात् त्वच्चित्रेण पवित्रेण वस सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा देवस्वापणात् त्वच्चित्रेण पवित्रेण वस सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा कलसम्पूर्णा समेतो गृहीत्वा मूलाग्र्याकृतं स्पर्शयित्वा अभ्यर्च अक्षता आध्याचरुभिः इन्द्राय नमः यमाय नमः वरुणाय नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः अग्नये नमः जातवेदसे नमः सहोजसे नमः अजराप्वे नमः विशर्पणे नमः अग्निपुरुषाय नमः अतिथेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसवितः प्रसुभा ब्रह्मन् सोत्तमादास्वा आदस्वा समेतजस्वाहा आगार मुहूर्तस्तु मुहूर्तोस्तु परदेश पृष्ठा वाजब्जादाग्नेय अन्तं प्रजापतिगे स्वाहा नैऋत्यादिशानान्तम् इन्द्राय स्वाहा अग्नेये स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्नि सोमाभ्याग स्वाहा प्रजापतिगे स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा वसुभ्य स्वाहा वरुभ्य स्वाहा रुद्रेभ्य स्वाहा अपोपस्पृश्य श्रीविष्णवे स्वाहा बृहस्पतये स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्य स्वाहा अशुभ्यागु स्वाहा पूष्णे स्वाहा कक्षाय स्वाहा कक्षदेवतसोमाय स्वाहा औपासनज्ञाय स्वाहा यज्ञविश्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वदेवेभ्य स्वाहा चरुन् सावित्रा गृहीत्वा ओं भू स्वाहा ओं भुव स्वाहा ओं शुभ स्वाहा ओं भूर्भुवस्सुभ स्वाहा अदितेन्वमग्गुस्ताः अनुमतेन्वमग्गुस्ताः सरस्वतेन्वमग्गुस्ताः देवसवितप्रासावीः प्राणानाम्यास्यां स्मृतितो श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गम् औपासनाख्यौ मन्त्रलोपे क्रियालोपे द्रव्यलोपे कालविपर्यासे क्रमविपर्यासे न्यूनातिरिक्त सर्वदोषप्रायश्चित्तार्थम् अतो देवादिवैष्णवहोमं होष्ये अतिथेन मन्यस्व नमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसवितप्रसुभ वं मतो देवावन्तु न यदा विट्टर्विजक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः स्वाहा इदं विट्टर्विजक्रमे त्रेधानतदेवतं समूढमस्य पागुं श्रे स्वाहा त्रीणि पदाविजक्रमे विष्णुर्गोपादाब्जः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णोकर्माणि पुष्यते दो वृतानि पुष्पसे इन्द्रस्वजुद्धस्य स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदकं तदा पश्यन्तु शौर्यः द्वे वदक्षुरादग्गु स्वाहा तद्विप्रासो पञ्चमोजाग्रुमागं सस्यमिन्दते विष्णोर्यत्परमं पदग्गु स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं भुव स्वाहा ओं शुभ स्वाहा ओं भूर्भुवस्सुभ स्वाहा अतिथेन्वमग्गुस्ताः नमतेन्वमग्गुस्ताः सरस्वतेन्वमग्गुस्ताः देवसवितः प्रासावीः
వేదిగామతి నుండి కలికి జౌవనపు యాగము చేసినతడు భాజం దివ్యానాదం కుశలపరిషత్కేతదండండపాణిం వేదారావం రుణమయమహం వాహనం దోష్కదుష్కం వింబేజంతం విఘ్నసమహం ప్రాప్తవంతం భజామి. అత భగవతో మహాపురుషస్య శ్రీమదాదినారాయణస్య అచింత్యాత్ పరిమితశక్త్యా ప్రియమాణస్య మహాజలోకస్య మధ్యే పరిభ్రమమాణానామనేకకోటి బ్రహ్మాండానాం ఏకదమే పృథివ్యప్తేజో వాయువ్రాకాశహంకార మహదువ్యక్తాఖ్య సప్తావృణైరావృతే అస్మిన్ మహతి బ్రహ్మాండే ఆధారశక్తిశ్రీవరాహ కూర్మానంతాష్ట దిగ్గజో ప్రతిష్ఠితానాం అతల వితల సుతల తలాతల రసాతల మహాతల పాతాళాఖ్య సప్తలోకానాం మూర్ధ్వభాగే భూలోకే భువర్లోక సువర్లోక మహర్లోక జనోలోక తపోలోక సత్యలోకాఖ్య షల్లోకానామదో భాగే మహానాళాయమానస్య ఫణిరాజశ్చేషస్య సహస్రఫణాఫణిమండలమండితే
ఐరావత పుండరేక వామన కుముదాంజనముత్పదంత సార్వభౌమ అష్టదిగ్దండ శుంఠాద్దండోద్దంబితే అమరావతే తేజోవతే సంయమన రక్షోవతే సింధుమతే గంధవత్యలగావతే జశోవతే త్వష్టదేవపురీ విరాజితే ఇంద్రాగ్నియమునిర్దివరుణవాయు కుబేర ఈశానాఖ్య అష్టలోకపాలక పరిపాలితే లోకాన్ లోకాన్ చలవలయితే లవణేక్షరాదర్పిరదక్షేరతత్వోదకాఖ్య సప్తార్ణ పరివృతే జంబూ ప్లక్షకుచక్రౌంచ సాకశాల్మి పుష్కరాఖ్య సప్తద్వీపద్వీపితే మాహేంద్రమలయమదృక్ష్వదింజపారియాత్రాఖ్య సప్తకులపర్వత విరాజితే భారతకం పురుష హరీరావృత భద్రాస్మకేతుమాల హిరణ్యకరమణక కురువర్షాఖ్యం వర్షాణం మధ్యే భరతవర్షే భరతఖండే మహాసరౌరహాకార పంచాశత్కోటి యోజన విస్తీర్ణ భూమండలే లక్షయోజన విస్తీర్ణ జంబూద్వీపే దండకారుణ్యే ప్రజాపతి క్షేత్రే కర్మభూమౌ అవంతే కురుక్షేత్రాది సమభూమధ్యరేఖాయా పూర్వదిగ్భాగే కృష్ణా కావేర్యోర్మధ్యప్రదేశే ఆదివరాహ క్షేత్రే వెంకటాచలే సకల దేవతా సన్నిధౌ సకల జగత్రష్టు ప్రార్థయద్విమనో బ్రహ్మణో ద్వితీయ పరార్థే ప్రథమ వర్షే ప్రథమ పక్షే ప్రథమే హని ద్వితీయాజామే యజన్మని చ ఏదక్షరపర్యంతం బాల్య యౌవన కౌమారవార్ధకేషు రహస్య ప్రకాశే చ ఆవృత్తనావృత్త మహాపాతకాది సమస్త దుర్దక్షయార్థం దశపూర్వేషాం దశాపరేషాం మధ్వంశ్యానాం మాతృవంశ్యానాం సర్వేషాం పితॄణాం చ కుంభే భాగలోకి దదామాదివసంగాతః కాలసూత్రాది వివిధేభ్యో మహాఘోరేభ్యో నరకేభ్యః వృత్తైస్థలే సూర్యమండలపర్యంతం ఆమోద బ్రహ్మోద సంహోద వైకుంఠాఖ్యలోకేషు సాలోక్య సారూప్య సామీప్య సాయుజ్యమితి చతుర్విధమోక్షఫలసిత్యర్థం శ్రీలక్ష్మీనారాయణ ప్రీత్యర్థం భృగుమరీచత్రకస్యపాదిభిః కోటిచాతుర్లక్ష ప్రణానేన దివ్య వైదిక విధానేన నానావిధ శాస్త్రోక్త మార్గేణ వేదోక్త ప్రకారేణ విఘ్నసోక్త ప్రకారేణ హేమాద్రకన్యాదాన ఫలావాప్త్యర్థం కన్యాదానం కరిష్యే. అస్య శ్రీమదాది నారాయణస్య అనేక కోటి బ్రహ్మాండ నాయకస్య అనంత కళ్యాణ గుణగణక గాంభీర్యస్య దివ్యమంగళ విగ్రహస్య శంఖచక్ర గదా పద్మాంకిత కోటి సూర్య ప్రకాశస్య శ్రీమతో వైకుంఠ నాయకస్య శ్రీమద్వైకానస భగవస్య స్తోక్త మార్గేణ ఆంగేన చ భారస్పత్య భారద్వాజ త్రజారుషేయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య పంచవిధ వ్యూహ ప్రవర్తమానస్య పరతత్వపవయోహంతర్యామి అర్చావతార స్వరూపస్య శ్రీ మహావిష్ణోః పరబ్రహ్మణోన్నత్రే ఆంగేన చ భారస్పత్య భారద్వాజ త్రజారుషేయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య జగత్కారణభూతస్య మూల ప్రకృతి స్వకీయమానస్య త్రిగుణాత్మకస్య గుణత్రయోక్షాదివసాద్ ఉత్పస్థితలయ కారణభూతస్య శ్రీ మహావిష్ణోః పరవాసుదేవ శర్మణః పౌత్రాయ ఆంగేన చ భారస్పత్య భారద్వాజ త్రజారుషేయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య సమస్త దేవతాని కుటమకుటమనిగణ విజృంభిత పాదార విందస్య శ్రీ మహావిష్ణోః ఆదినారాయణ శర్మణః పుత్రాయ ఆంగేన చ భారస్పత్య భారద్వాజ త్రయారుషేయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవాయ భక్తలోక పరిపాలనాయ కిరీటహార కేయూర దివ్యాభరణ భూషితాయ దివ్య కౌస్తుభాలంకృతాయ దివ్య పీతాంబరధరాయ దివ్యమాల్యోశోభితాయ ప్రపన్న పారిజాతాయ నిజావతారాయ స్వర్ణగరుడ వాహనారూఢాయ అచింత్యాత్మక నిత్య యవ్వన స్వభావ లావణ్య తేజో రత్నాకరాజ అఖిల శాఖాధ్యాయినో అఖిల లోక పవిత్ర గోత్రాజ శ్రవణ నక్షత్రే మకర్రాసో జాతాజ శ్రీ శ్రీనివాస స్వామి పరబ్రహ్మణే వరాజ రుగ్జశ్యామాదర్వణ సకల వేదాధ్యాయినే భార్గవత్యోనోప్మ ఔర్వైదల పంచారుషేయ ప్రవరాన్విత భార్గవస గోత్రోద్భవీం సర్వాలంకారవతీం సురాంగణా సంసేవిత పాదారవిందాం శ్రీ మహావిష్ణోః వక్షస్థల నివాసినీం ఆనందగుణాత్మికాం మూల ప్రకృతి రూపాం ఉత్తరఫల్గుణీ నక్షత్రే కన్యారాసో జాతాం ఇమాం శ్రీదేవీ నామ్నీం కన్యాం వృణీమహే
वृणीत्वन्धास्यामि ऋग्यजुष्यामादर्वण सकल वेदाध्यागिने कात्सभावत्सालने ध्रुवत्रजारुषेय प्रवरान्विदा काश्यपसगोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारवतीं सुराङ्गना संसेवित पादारविन्दां श्रीमहाविष्णोः अत्यन्त मनोहरीं अत्यन्त सौन्दर्यवतीं रेवती नक्षत्रे मीनरासो जातां कश्यप प्रजापते संकल्पतनयाम् इमां भूदेवीनाम्नीं कन्यां वृणीमहे वृणीत्वन्धास्यामि कन्यां कनकसम्पन्नां कनकाभरणैर्युतां दास्याम्यष्टवेदुभ्यं ब्रह्मलोकतिकेशयेत् कन्यां स्वलङ्कृतां साध्वीं सुशीलाय सुमेधसे प्रेदोऽहं प्रयच्छामि धर्मकामार्थसिद्धयेत् विश्वम्भरा सर्वभूत साक्षिण्यः सर्वदेवताः इमां कन्यामृदास्यामि प्रीणातु कमलापतिः कन्यादानमुहूर्तस्तु मुहूर्तोऽस्तु सुप्रतिष्ठितमस्तु शुभगुं शुभम् ஏடுகொண்டலவாடா வெங்கடரமணா கோவிந்தா கோவிந்தா. திருமலை அப்பனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே மகா சங்கல்பம் கன்னியாதானம் கைங்கரியங்களை சேவித்தோம். அடுத்ததாக மாங்கல்ய பூஜை சேவிக்க இருக்கிறோம். ஸ்ரீமன் நாராயணனின் நிலைகள் 5. அவை பரத்வம், வியூகம், விபவம், அந்தர்யாமி, அர்ச்சை என்பன. திவ்ய தேச மூர்த்திகள் ரூபங்களை மிகவும் விசேஷமானவை. ஸ்ரீமன் நாராயணன் அந்த லீலா விபூதியில் இகமே பரமென்று மயங்கி பிறவி என்னும் பெருங்கடலில் அழுந்தி அல்லல் படும் உயிர்களை காத்து அவர்களுக்கு மயர் வர மதிநலம் வழங்க வீடு பேரளித்தும் தீயோரை அழித்தும் தர்மத்தை நிலைநாட்டுவதற்காக தன்னுடைய பெருங்கருணையினால் ஆன பெருமாள் ஆயிருந்த போதிலும் பிறக்கிறார். அப்படி அவர் செய்த அவதாரங்கள் எண்ணில் அடங்காது. அந்த அவதாரங்களில் மிகவும் விசேஷமானது அவதாரம் வராக அவதாரம். வேதங்களும் ஆகமங்களும் புராணங்களும் ஆழ்வார்கள் தம் அமுத பிரபந்தங்களும் எம்பெருமான் வராக அவதாரம் எடுத்து மண் மடந்தையே ரசா தலத்திலிருந்து மீட்டதையும் ஹிரண்யாக்ஷனை அழித்ததும் பற்றி கூறப்படுகிறது. ஸ்ரீமுஷ்ணம் என்ற தலம் ஒரு ஸ்வயம் தானாகவே தோன்றிய திவ்ய தலமாகும். நம் இந்தியாவில் 8 ஸ்வயம்வக்த தலங்களிலே அவற்றில் வட இந்திய அவல்சால கிராமம், நைமிசாரண்யம், புஷ்கரம், பத்ரிநாத், பத்ரிகாசிரமம் என்றும் 4 தென்னிந்தியாவிலே ஸ்ரீமுஷ்ணம், திருமலை, ஸ்ரீரங்கம், வானமாமலை எனவும் விவரிக்கிறது. ஹிரண்யாக்ஷனை சம்ஹரித்து பெருமாள் மண்மடந்தையை தாங்கி எழுந்தருளிய தலமே ஸ்ரீமுஷ்ணம் என்பார்கள். அந்த தலத்திலே பூமியை இடந்து நிலை நிறுத்திய பின் எம்பெருமானுடைய வேர்வையினால் உண்டானதே இங்கிருக்கும் புஷ்கரணி. இந்த சித்ரா பௌர்ணமி அன்று 3.5 கோடி தீர்த்த தேவதைகள் வராக பெருமாளின் தீர்த்தவாரி உற்சவத்திலே கலந்து கொண்டு அவரை தரிசித்து ஆனந்தமடைவார்களாம். அப்படி பூவராக க்ஷேத்ராதிபதியாகவும் எல்லா க்ஷேத்திரங்களுக்கும் பூபதியாகவும் அவரே விளங்குகிறார். வராகத்தின் 4 பாதங்களும் வேதங்கள். அப்படிப்பட்ட பூவராக சுவாமி அவதாரம் எடுத்த திருவேங்கடவனுக்கு இதோ கல்யாண உற்சவத்திலே மாங்கல்ய பூஜை நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது. அந்த மாங்கல்யங்களுக்கு அர்ச்சக சுவாமி பூஜை செய்து கொண்டிருக்கிறார். பகவானே வேங்கடவனே கோவிந்தா 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 என்று சேவித்து கொண்டு அந்த எம்பெருமானை நாம் சேவிக்கலாம். பிராட்டியின் வேண்டுகோளுக்கு இணங்கி சட்டர்முகனின் வேலி கொண்டலத்திலிருந்து உதித்த யக்ஞவராகனே இந்த தலத்தின் உற்சவராக விளங்குகிறார். அந்த மூர்த்தியை தம் மடியில் எழுந்தருள பண்ணும் பிள்ளை பேரில்லாத தம்பதியினர் சத்புத்திர சந்தான பிராப்தியை அடைவார்கள் என்பதும் நிச்சயம். அப்படி இங்கே சாஸ்திரம் தெரிந்த பெரியோர்களும் ஜோதிட நிபுணர்களும் ஒப்புக்கொள்ளும் உண்மையான கருத்து. இந்த அங்கே சந்தான கோபாலனாகி இங்கு திருவேங்கடமுடையானாக அருளி செய்யும் அந்த எம்பெருமானுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே இதோ மாங்கல்யங்களுக்கு பூஜை நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது. சேவிக்கலாம் அந்த மாங்கல்யங்களை.
அதாவது அந்த மாங்கல்யங்களை சுத்தப்படுத்தி அதற்கு மஞ்சள் குங்குமம் இட்டு அக்ஷதை திருத்துழாய் போன்றவைகளால் பூஜை செய்வார்கள். இன்று செவ்வாய்க்கிழமை, அதாவது சதுர்தசியுடன் கூடிய அமாவாசை அங்காரக சதுர்தசி என்றும் கூறுவார்கள். ஆக இந்த விசேஷமான நன்னாளிலே பகவானுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே இப்பொழுது மாங்கல்ய பூஜை செவித்து கொண்டிருக்கிறோம். திருமலை அப்பா வெங்கடவனே கோவிந்தா கோவிந்தா என்று சர்வம் விஷ்ணுமயம் ஜெகத் என்பது வேத வாக்கு. விஷ்ணு என்ற சொல்லிற்கு எங்கும் பரவியிருப்பது என்பது பொருள். சர்வ வியாபியாய் ஸ்ரீ மகாவிஷ்ணுவானதால் விஷ்ணுமயம் ஜெகத் என்று கூறுகிறார்கள். உடம்பினை முன்னே இழுக்கென்று இருந்தேன், உடம்பினுக்குள்ளே ஒரு பொருள் கண்டேன், உடம்புள்ளே உத்தமன் கோவில் கொண்ட அனென்று உடம்பினை யானிருந்து ஓம்புகின்றேனே என்கிறார் திருமங்கை ஆழ்வார். அப்படி ஆழ்வார்களால் மங்களாசாசனம் செய்யப்பட்ட தலங்கள் ஏராளம். அதிலும் திருமலை அப்பனை மங்களாசாசனம் செய்த தலம் இந்த திருமலை. ஆகவே பகவானுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே இப்பொழுது நாம் மாங்கல்ய பூஜை செய்து கொண்டிருக்கிறோம். அந்த பரமபுருஷன் ஆகிய விஷ்ணுவின் மகிமை அளவில் அடங்காது. பூமியில் உள்ள தூசுகளை எண்ணினாலும் எண்ணலாம். அந்த பரம்பொருளின் பெருமையை கணக்கிட முடியாது. பெற்ற தாய் செய்வதை விட பல மடங்கு சக்தி வாய்ந்த அந்த தாயாரிடம் நாம் நம்முடைய குறைகளையும் கஷ்டங்களையும் கூறினால் தாயார் அருளி செய்வாள் பகவானுக்கு கூறி. प्रजापति सोमगुं राजानमुसृजतां मन्त्रजो वेदान्वसृज्यन्तां तान् हस्ते कुरुता अतः सीता सावित्रीं श्रीदेव्यै नमः माङ्गल्यधारणं करोमि. प्रजापति सोमगुं राजानमुसृजतां मन्त्रजो वेदान्वसृज्यन्तां तान् हस्ते कुरुता अतः सीता सावित्रीं भूदेव्यै नमः माङ्गल्यधारणं करोमि. माङ्गल्यधारण मुहूर्तस्य मुहूर्तोऽस्तु सुप्रतिष्ठितमस्तु शुभं शुभम्. చూచి నీ పెళ్ళికి సోవాన పాడి ముదాక నీ చేతలిట్టివని మేమించగలమా? చూచి నీ పెళ్ళికి
చూచి మీ పెండికి సోవాన పాడి ముదాకా ప్రధాన హోమం కృష్యేది తేన మన్యస్మ హనుమతేన మన్యస్మ దురస్పదేన మన్యస్మ దేవసవిద ప్రసుమ మమ్మే వృణస్వదేవ మధ్యాజ ముడజాత్మా మమ సురాజగే స్వాహ తత్వాజామి బ్రహ్మణో మందమానసదాసాస్తే యజమానో అవిర్భే అహేడమానో వరపోద్రసుకం సమానాయ ప్రమోషే స్వాహ వర్ణో అగ్నే వృణస్వ విద్వాన్ దేవస్య హేడో వజాత దేష్టా హేతుష్టామన్యం దశోషు చాణో స్వాన్ ద్వేషాగం సే ప్రమద్యస్మ స్వాహ సత్వన్నో అగ్నే భవో భవోదేనేదుష్టవ్యస్యామసదవ్యష్టౌ అవజక్షుణామ్రేమృగం సమరయాదు స్వాహ త్వమగ్నే యాసన్ యయాసన్ గిదః అయాసన్ హంజమోషే యానో దేవేషు స్వాహ చిత్తం జస్వాహ చిత్తస్య స్వాహ ఆకూతం జస్వాహ ఆకూతిస్య స్వాహ విజ్ఞానం జస్వాహ విజ్ఞాతం జస్వాహ మనస్సస్వాహ సుకరే తస్వాహ పూర్ణమాదత్త స్వాహ ఓం భూ స్వాహ ఓం భవత్ స్వాహ ఓం శుభ స్వాహ ఓం భూర్భవత్వ స్వాహ అతిథేన్వమగ్గుస్థానమదైన్వమగ్గుస్థాః సరస్వతైన్వమగ్గుస్థాః దేవతవిద ప్రాసావేః ప్రాణానాం యాస్యాం స్మృతిదౌ శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినః వైవాహికోత్సకర్మాంకం ఓపాసనాఖ్యౌ లాజహోమం కరిష్యే అతిథేన మన్యస్మ హనుమతేన మన్యస్మ సరస్వతేన మన్యస్మ దేవతవిద ప్రసవ ఇమాన్ లాజానమిత్యభికార్య ఇమాన్ లాజానావపామి సమృద్ధ్యకరణాన్ మమ తుభ్యం చ సంవదనాత్ తదగ్నిరనుమన్యతాం యన్నాత్పృపబ్రోదోజ్ఞౌ లాజానావపంతే దీర్ఘాజురస్తు మే పతిరేదంతాం జ్ఞాతజో మమ స్వాహా ఇమాం లాజానావపామి సమృద్ధ్యకరణాన్ మమ తుభ్యం చ సంవదనాత్ తదగ్నిరనుమన్యతాం యన్నాత్పృపబ్రోదోజ్ఞౌ లాజానావపంతే దీర్ఘాజురస్తు మే పతిరేదంతాం జ్ఞాతజో మమ స్వాహా ఇమాం లాజానావపామి సమృద్ధ్యకరణాన్ మమ తుభ్యం చ సంవదనాత్ తదగ్నిరనుమన్యతాం యన్నాత్పృపబ్రోదోజ్ఞౌ లాజానావపంతే దీర్ఘాజురస్తు మే పతిరేదంతాం జ్ఞాతజో మమ స్వాహా ఓం భూ స్వాహ ఓం భవత్ స్వాహ ఓం శుభ స్వాహ ఓం భూర్భువస్సువ స్వాహ తదేన్వమగ్గుస్థానమదేన్వమగ్గుస్థాః సరస్వతేన్వమగ్గుస్థాః దేవతవిద ప్రాసావేః ప్రాణానాం యాస్యాం స్మృతిదో శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినః వైవాహికోత్సకర్మాంగం ఓపాసనాఖ్యౌ సర్వదో చ ప్రాయశ్చిత్తార్థం అతో దేవాదివాశ్వం హోష్కే అతిథేన మన్యస్మ హనుమతేన మన్యస్మ సరస్వతేన మన్యస్మ దేవతవిద ప్రసుభావం మతో దేవావంతురాంగిదా విట్రవిదక్రమే పృథివ్యా సప్తధామ విస్వాహ ఇదం విట్రవిదక్రమే త్రైధానత దేవదం సమో నమస్య భాగం త్రే స్వాహ త్రీణి పదా విదక్రమే విట్రగోపాదాభ్యః తతో ధర్మాణి ధారయన్ స్వాహ విష్ణాకర్మాణి పశ్యదేదో వృధాన విస్పసే ఇంద్రదత్తకా స్వాహ తద్విష్ణో పరమం పదకం సదా పశ్యంతి శౌరయః దివే మదక్షరాదగ్గు స్వాహ తద్విప్రాసో పంచమో జాగృవాగం తస్కమిందదే విష్ణార్యత్పరమం పదగ్గు స్వాహ ఓం భూ స్వాహ ఓం భవత్ స్వాహ ఓం శుభ స్వాహ ఓం భూర్భవత్సువ స్వాహ దదేన్వమగ్గుస్థానమదేన్వమగ్గుస్థాః దేవతవిద ప్రాధానేః ప్రాణాయామాస్యాం ప్రతిదో శ్రీనివాసస్వామినః వైవాహికోత్సకర్మాంగం ఉపరిట్టాదంత హోమం కరిష్యేది తేన మన్యస్మ హనుమతేన మన్యస్మ సరస్వతేన మన్యస్మ దేవతవిద ప్రసుభ యతస్సకర్మణోత్వరే నిజం విద్వాన్యో నమఃకరం అగ్నిస్త చుట్టకుట్ విద్వాంస సుఖదం కరోతు స్వాహ అగ్నయే చుట్టహృదా ఉదయనాం కామానాగం సమంత్రే స్వాహ అగ్నయే స్వాహ అగ్నినాదాయ స్వాహ అగ్నేనపతగే స్వాహ ప్రజాపతగే స్వాహ శ్వేభ్యో దేవేభ్య స్వాహ సర్వాభ్యో దేవతాభ్య స్వాహ ఇంద్రాయ స్వాహ అగ్నే దేవకృతే స్వాహ వాస్తుపదే నమో వాస్తుపతగే స్వాహ జన్మ ఆత్మాభూతగ్నిస్తత్ పునరాగ జాతవే దామదర్శని స్వాహ పునరగ్నిశ్చక్షురదాత్ పునరింద్రో బృహస్పతిః పునర్వేశ్వమాయ మాం చక్షరాదిత్యమక్ష స్వాహ ఇష్టేభ్య స్వాహ వచననిష్టేభ్య స్వాహ వేచృత్యై స్వాహ స్తుత్యై స్వాహ దౌరాజ్యై స్వాహ దైవీభ్య స్వాహ తనూభ్య స్వాహ సమృద్ధ్యై స్వాహ సర్వసమృద్ధ్యై స్వాహ ఏదోష్యేదసేమహి స్వాహ సమిదసే తేజోసే తేజోమయదే స్వాహ యమస్య దేమ మృత్యోర్భోభాయ స్వాహ సోమస్య దేమ చిత్తం మే భాయ స్వాహ వాజోర్దిమహి ప్రాణాన్మే భాయ స్వాహ బ్రహ్మణోదిమహి బుద్ధిం మే భాయ స్వాహ సప్తదే అగ్నే సమిదత్ సప్తదిత్వ సప్తఋషయ సప్తధామ ప్రియాణి సప్తహోత్రా తత్పదాత్మా యంత సప్తజోనిర్
रार्पणस्मा कृते न स्वाहा अग्निर्भक्तः स्वाहा वेदर्भक्तः स्वाहा जोर्भक्तः स्वाहा पृथ्वी भक्तः स्वाहा अग्निर्जैर्नं वेदज्योर्नं जोर्जैर्नं पृथ्वी जैर्नं वोषदमनस्त्राप्तन देवदैर्नः स्वाहा तदान विद्वा अनुष्टभृतेन पूर्णमाहुतिं जहोमि मनसा प्रजापतये स्वाहा आद्यशेषम् इंद्राय जहोमि स्वाहा अग्निसुप्यनो वेदसुप्यनो जोष्सुप्यनो पृथ्वी सुप्यनो ब्रह्माद्या सुप्यन्ताम् अदितेन्वमग्गुस्ताः सरस्वतेन्वमग्गुस्ताः देवतविद प्रासामेः आवाक्यदेवताभ्यो नमः यथास्करं यथास्थानं प्रतिष्ठापयामः क्षमणार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च पवित्रमस पवित्र में भूजा स्वाहा सर्व सर्व में भूजा स्वाहा अक्षत विमा में श्रेष्ठां प्राच्यां दक्षिणायां मुद्रायां उदीच्यां ऊर्ध्वायां मार्धयन्तां पश्चिमतः परदिमपनजा सर्वान् प्रसमोच्य ग्रन्थिं विसृज्याग्निः प्रोक्ष आप्यायन्तामिति जुहोति आप्यायन्तामापमोषत जोमरुतान् प्रजस्पततो नो मृट्टमेर यस्माः शुध्यन्तान् दे वसदनकं शुध्यन्तान् दे वसदनं भूतिस्मातेर्लभते नित्यगुं सर्वजज्ञकृतं भवेत् भूतिस्मातेर्लभते नित्यगुं सर्वजज्ञकृतं भवेत् अग्निर्मारुतजाड्भूतिः आदित्यस्वामो नमः प्रजाजुषं जमदग्ने कश्चमत्यत्रजाजुषं तद्धेवानां त्रजाजुषं तन्मे अस्तु त्रयाजुषं दीर्घायुत्वाज बलाज सताज सदञ्चवत्यक्षेत्रजाजुषं आबोधिष्ठामजोपस्थानमोर्चेतदादर पहैरणाजचक्षुषे जोपस्तपदमोरदस्तस्य बाधकतेनः उषधेरव मातरः तस्मारङ्गमामभोजसक्षजायजन्मधः आपो जनयदाचनः अग्निपुरुषाय नमः ग्लोपहार निवेदयामि आद्योपहारं समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः पुनर्पाद्यर्घं समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः यदा सुगमदास्नानं प्रतिष्ठापयामि क्षमणार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च तत्सब्रह्मार्पितमस्तु सर्वं श्रीभूमेला समेत श्री श्रीनिवासार्पितमस्तु ஏடுகொண்டலவாட வெங்கடரமணா கோவிந்தா கோவிந்த திருமலையப்பனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே இதோ இப்பொழுது நாம் வாரணமாயிரம் கைங்கரியத்தை செவிக்கு இருக்கிறோம். வாரணமாயிரம் பாசுரங்கள் 11. நாச்சியார் திருமொழியிலே 143 பாசுரங்களை இயற்றிய ஆண்டாள் வாரணமாயிரத்திற்கென்று தனியான 11 பாசுரங்களை ஒதுக்கி அதிலே தான் அந்த ரங்கமன்னாரை திருமணம் செய்து கொள்வதாகவும்
பந்தல்கள் எல்லாம் நன்றாக பாக்கு மரங்களாலும் தென்னை மரங்களாலும் அதாவது வாழை மரங்களாலும் அலங்கரிக்கப்பட்டது என்றும் அதிலே யானையின் மீது வந்து என்னை திருமணம் செய்து கொண்டான் என்றும் அந்த பாசுரங்களை பாடிக்கொண்டே தேங்காய்களை உருட்டி கைங்கரியத்தை நடத்தினார்கள். அதைத் தொடர்ந்து மாலா பரிவர்த்தனம். அதே ஆண்டாளானவள் ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரிலே பெரியாழ்வாரின் மகளாக அவதரித்தவள். அந்த தாயார் மாலைகளை தொடுத்து பெருமாளுக்கு அனுப்புவாள். தினந்தோறும் தான் சூடி களைந்து கொடுத்த மாலை தான் பெருமாளுக்கு அணிவிப்பார். அதை ஒரு நாள் நேரடியாக கண்டுவிட்ட விஷ்ணு சித்தர் கோபம் கொண்டு வேறு மாலையை தொடுத்து கொண்டு சென்று பகவானுக்கு அணிவிக்க, அந்த சமயத்திலே பகவான் அணிந்து கொண்டு அன்று இரவிலே கனவிலே தோன்றி தனக்கு ஆண்டாள் சூடிய மாலை தான் கொடுக்க வேண்டும், அனுப்ப வேண்டும் என்று கூறி சொல்லுகிறார் அந்த விஷ்ணு சித்தர் இடம். இதோ ஸ்ரீதேவி பிராட்டிக்கு அனுப்பி திரும்பவும் அவள் அனுப்பி திரும்பவும் அதே மாலையானது பூமி பிராட்டிக்கு அனுப்பப்படுகிறது. அப்படி அந்த மகாலட்சுமியின் அம்சமாக அவதரித்தவள் தான் இந்த ஆண்டாள். அவள் அனுப்பிய மாலை திரும்பவும் அவளுக்கே அணிவிக்கிறார். லக்ஷ்மி ரமண கோவிந்தா, வசுந்தரா ரமண கோவிந்தா கோவிந்தா என்று அந்த பூமி பிராட்டி அனுப்பிய மாலையை பகவானுக்கு திரும்பவும் அணிவிக்கிறார்கள். இத்துடன் அந்த மாலா பரிவர்த்தன கைங்கரியம் முடிவு பெற்றது. அதைத் தொடர்ந்து பகவானுடைய பக்கத்திலே ஸ்ரீதேவி பூதேவி பிராட்டிமார்களை அசீனப்படுத்தி அதன் பிறகு அக்ஷதாரோப்பணம் என்னும் தலம்பரால கைங்கரியத்தை நடத்த உள்ளார்கள். பக்தர்கள் எல்லாம் நேரடி ஒளிபரப்பில் எம்பெருமானுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்தை பார்த்து மகிழ்ந்து சேவித்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அந்த திருவேங்கடமுடையானுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே இதோ அடுத்ததாக நாம் சேவிக்க இருப்பது அக்ஷதாரோப்பணம் என்னும் தலம்பரால கைங்கரியம். அந்த அக்ஷதாரோப்பணத்தை தொடர்ந்து மங்கள நீராஜனத்துடன் திருக்கல்யாண மகோத்சவம் நிறைவு பெறுகிறது. தலையிலே பரிவட்டம் கட்டிக்கொண்டு அர்ச்சக சுவாமி ஆயத்தமாகிறார். மூவரின் சிரசின் மீதும் தூவி மங்கள நீராஜனத்தை சமர்ப்பிக்கிறார். పిడికిట తలంబ్రాల పెళ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వేనే పెళ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెళ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వేనే పెళ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెళ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వేనే పెళ్లి కూతురు. పేరుల ముత్యాల మెడ పెళ్లి కూతురు. పేరంటాళ్ళ నడిమి పెళ్లి కూతురు. పేరంటాళ్ళ నడిమి పెళ్లి కూతురు. విభు పేరు పుచ్చ సిగ్గుబడి పెళ్లి కూతురు. పేరంటాళ్ళ నడిమి పెళ్లి కూతురు. విభు పేరు పుచ్చ సిగ్గుబడి పెళ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెళ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వేనే పెళ్లి కూతురు. కంటే పెళ్లి కూతురు. బిరుదు పెండ
గుండెము వెట్టే పెండ్లి కూతురు నెరబిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు పిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు పిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు పతి పెరరేచినిదివో పెండ్లి కూతురు పిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు. विना वेङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ. Govinda